can carry a maximum load of 1800 kg elevator plus passengers is moving up with a constant speed of 2 meter per second. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. So, determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in horsepower. So, in this example, किसकी बात हो रही है? एलिवेटर है, एलिवेटर विच इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, एंड उसका डेटा दिया हुआ है कि कितना है, n इज इक्वल टू 1800 एंड वो डेटा है एलिवेटर प्लस पैसेंजर उसमें उसके वैल्यू दिया हुआ है, सो विच इज इक्वल टू 1800 kg, ओके. नाउ विच इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शंस एंड विच इज हैविंग कांस्टेंट वैल्यू. कांस्टेंट v की वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है. Now, as we know that there is because of the gravity, there is downward directions में क्या लगेगा? mg लगेगा, and as per the given data, that is frictional force also. But as we know that जो motions हो रही है यानी कि ये upward directions में जा रहा है, तो उसके exactly opposite directions में frictional force लगेगा, and ये frictional force की value हमें दी हुई है, कितनी है? 4000. That means ये Ff that will be is equal to what? 4000 न्यूटन, which is our given data में दिया हुआ है. तो ये अभी इधर हमने लिख दिया हुआ है. As well as g की वैल्यू we can consider as 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम कंसीडरेशंस कर लेते हैं. चलो, now what we have to find out? We have to find out the value of the power in watt as well as in HP. ठीक है. चलो, so before that we must have to find out the value of the force. चलो, why? Because as we know that power का equations क्या है? Power P is equal to force multiplication of V. We already have the value of the V, but so therefore first of all we have to find out the force. So F is equal to what? F is equal to, as shown in the figure, downward directions में mg है plus frictional force है, तो F is equal to mg plus frictional force है, okay, and we already know about the value of the n is equal to 1800, g is equal to 10 plus इसकी वैल्यू गिवन डेटा में है, तो अभी इसका सिंप्लीफिकेशंस करें तो क्या हो जाएगा? ओके, इज इक्वल टू 22,300 न्यूटन. सो ये हमारा हो गया फोर्स, ओके, फोर्स इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शंस बिकॉज़ ऑफ द फ्रिक्शनल एज वेल एज द ग्रेविटी. बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पावर. सो therefore पावर का इक्वेशन हमें पता है कि पावर P is equal to F into V. So F that means what? जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो that means 22,300 मल्टीप्लिकेशन ऑफ V गिवन डेटा में आएगी 2 मीटर पर सेकंड. सो therefore हमारी वैल्यू आ जाएगी 4,300, बट यूनिट ऑफ द पावर इन वाट. तो ये हमारा पावर का आंसर नंबर 1 हो गया इन वाट. बट also into the example में हमें we have to find out in terms of the HP also. चलो, so because of that since power P is equal to 4,400 डिवाइड बाय हमें क्या करना पड़ेगा? 736. क्यों? because 1 HP is equal to 736 watt. so therefore हमें जो भी वैल्यू वाट में है डिवाइड बाय कितना करना है? 736, एंड वो अभी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 59 HP में. ठीक है, दिस इज आवर आंसर इन HP. ठीक है, सो पावर इन वाट में 4,300 वाट है एंड इन HP 59 HP हो गया. ओके, एग्जांपल 6.12. Slowing down of neutrons in a nuclear reactor. A neutron of high speed, typically 10⁻⁷ meter per second, must be slowed to be 10⁻³ meter per second, so that it can have high probability of interacting with isotopes uranium and causing it to fission, so that the neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclei like a deuterium or a carbon, which has mass only few times of the neutron mass. The material making of the light nucleus, usually heavy water, D2O or graphite, is called as a moderator.
So in this example, what are the given data? Given में क्या बताया हुआ है? We must have to keep in mind collisions की बात हो रही है. Okay, we already derived into the theory. So collision का concept हमें याद रखना है. And in this case हमें considerations करना है कि m1 is equal to mass of neutron. That will be is equal to what? Small m considerations करना है. m2 is equal to mass of target nucleus, which is equal to capital M. That means m1 is equal to small m हमें considerations करना है and m2 is equal to capital M हमें consider करना है. ठीक है. And u1 is equal to small u हमें assume कर लेना है and u2 is equal to 0. क्यों 0 हो रहा है? Because at direct conditions में हम assume किया था in our theory. So over here we also have consider u2 is equal to 0. Now theory में हमने दो equations derive किया था, v1 as well as v2 का equations हमने derive किया था. So in our case we are writing for the v2 का equations क्या है? m2 minus m1 divided m2 plus m1 into bracket over into u2 plus 2m1 divided by m2 plus m1 into u1. ठीक है. चलो. So now we have to put all the value. चलो. m2 minus m1 उसकी वैल्यू क्या है? m2 की वैल्यू क्या है? हमने कंसीडरेशंस की कैपिटल M minus m1 क्या है हमारा? स्मॉल m. सिमिलरली इधर कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू u2 की वैल्यू क्या है हमारी? 0. तो ये टर्म तो पूरा 0 ही हो जाएगा प्लस 2m1 की जगह पे हमें क्या कंसीडरेशंस करना है? स्मॉल m एंड ओवर हियर m2 दैट मींस व्हाट? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू u1 की जगह पे हमें क्या कंसीडरेशंस करना है? u. ठीक है. चलो. सो ये पूरा का पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा. सो रिमेनिंग वाज ओनली व्हाट? 2m into u whole divided by capital M plus small m. So therefore v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2mu divided by capital M plus small m. Now we have to discuss about the initial kinetic energy as well as the final kinetic energy. So लिख देते हैं यहाँ पे initial kinetic energy. So initial kinetic energy को हम K1 से डिफाइन करें. So K1 is equal to what? K1 is equal to half m v square actually आता है. But in our case initial में क्या है? U1. So because of that reasons हम U1 लिखे, otherwise डायरेक्टली लिख सकते हैं U1 is equal to तो क्या है हमारा? UA. So half m v square आ जाएगा. ठीक है. चलो. Then after final kinetic energy K2 is equal to what? Half. फाइनल में दैट मींस कैपिटल M की बात हमें करनी है. टारगेटेड जो है न्यूक्लियस उसका मास कितना है? m है. सो कैपिटल M इनटू v2 स्क्वायर एंड वी ऑलरेडी डिराइव द वैल्यू ऑफ द v2 का इक्वेशन हमने डिराइव किया है 2mu डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m. सो दैटफॉर वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यू. सो 1 डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल M इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यू. सो व्हिच वन? 2mu डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m. तो अभी इसका सिंपलीफिकेशंस करते हैं. सो m ऐसे भी से डिवाइड बाय 2 ऐसे भी से इसका क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर है 4 m स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइड बाय m प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर. चलो. सो इसका सिंपलीफिकेशन सभी करें. इधर 2 है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा. सो रिमेनिंग कम्स इन व्हाट? as 2 कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर. This is our value for the K2. So now small f is equal to what? Now frictional, that means f is equal to energy transfer which is equal to what? K2 divided by K1 हमें करना है क्या? K2 divided by K1. So K2 की value we already have. So वो हम लिख देते हैं 2m small m square u square divided by में क्या होता है? कैपिटल M प्लस स्मॉल m divided by में K1. K1 की value क्या है हमारी? हाफ m u स्क्वायर है. सो इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं क्या है? 1 डिवाइड बाय 2 m u स्क्वायर. ठीक है. चलो. सो ये 2 कहाँ पे चला जाएगा? अपर. और 2 मल्टीप्लिकेशन 2 क्या होता है? 4 है. चलो. कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर u स्क्वायर होल डिवाइडेड में कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर इनटू m इनटू u स्क्वायर. ठीक है. चलो. सो यहाँ पे u स्क्वायर कैंसिल आउट. ठीक है. एंड स्मॉल m यहाँ पे m स्क्वायर है तो एक m कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दैटफॉर
k2 divided by k1 is equal to f जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, which is equal to what, ये हमारा 4 है यहाँ पे, कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर, ठीक है। सो ए f की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ड्यूटेरियम एंड एज वेल एज द कार्बन। सो ड्यूटेरियम की बात करें सो उसका मास कितना होता है, दैट विल बी इज इक्वल टू 2m, ठीक है। तो कैपिटल M इज इक्वल टू 2 into m स्मॉल m, ओके। चलो सो फर्स्ट की जो बात करें वो ड्यूटेरियम की बात करें तो m is equal to 2m है। दिस वैल्यू वी हैव टू पुट इन दिस इक्वेशंस, व्हिच इक्वेशंस वी ऑलरेडी डिराइव्ड दिस इक्वेशन। चलो तो यहाँ पे हम बात करें तो स्मॉल m is equal to 4 कैपिटल M into स्मॉल m है होल डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें कैपिटल M की जगह पे क्या लिखना है, 2m लिखना है। सो 4 एज इट इज है, यहाँ पे 2 into स्मॉल m as it is स्मॉल m बनाएंगे। Similarly over here 2m plus m whole square, ठीक है। चलो अभी इसका सिंप्लीफिकेशन ओनली हमें करना है। So therefore 4 multiplication 2 8 m into m n square whole divided by क्या आएगा 2m plus m, that means 3m whole square। So therefore 8m square divided by 3 का square 9 होता है। So ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो therefore 8 divided by 9 is nearly equal to the 0.9। तो ये हमारा स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी, ओके। चलो नाउ सेकंड केस में क्या करना है, फोर्थ कार्बन की बात करें तो सेकंड केस की बात करें तो कैपिटल M is equal to 12 into स्मॉल m। सो देयरफॉर ये वैल्यू जो है हमारी कैपिटल M is equal to 12m, दिस वैल्यू वी हैव टू पुट ओवर हियर। सो देयरफॉर स्मॉल m दैट विल बी इज इक्वल टू 4 कैपिटल M की जगह पे 12m into m as it is here। Similarly डिनोमिनेटर में 12m plus m whole square। So therefore 12 multiplication of 4 multiplication of m square whole divided by 12m plus m, that means 13m whole square। So therefore 12 4 is 48m square, डिनोमिनेटर में 13 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। सो 169 m square। सो देयरफॉर m square तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 48 डिवाइड बाय 169 हम करेंगे, सो आवर आंसर इज व्हाट 0.284। तो ये हमारा फोर्थ कार्बन के लिए वैल्यू आ जाएगी। एग्जांपल 6.13, कंसीडर द कोलाइजन demonstrated in figure to be between two billiard balls with equal masses m1 is equal to m2. The first ball is called a cube while the second ball is called as a target. The billiard players wants to sink the target ball in corner pocket which is at an angle theta2 is equal to 37 degree. Assume that the collision is elastic and that frictions and rotational motions are not important. So obtain theta 1. So in this example m1 is equal to m2 is equal to m दिया हुआ है and ये जो दो बिलियर्ड बॉल्स है वो कोलाइड हो रहा है and which is having something after a collision v1 and v2 उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है। चलो सो ये पहले फिगर हम समझ लेते हैं कि सपोज कोई मास है स्मॉल m, ओके। स्मॉल m इज इक्वल टू इसकी कुछ वैल्यू होती है u1, ठीक है। एंड m2 ये सेकंड हमारा है, ये हमारा सपोज कंसीडरेशंस कर लेते हैं m1, दिस इज अवर अनदर वन m2, बट एज पर द गिवन डेटा m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो बोथ आर हैविंग सेम वन। बट ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा बॉल है व्हिच इज एट द रेस्ट एंड रेस्ट है तो u2 इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। चलो नाउ ये दोनों टकरा रहा है, सो ऑब्वियसली एज वी नो दैट ये रेस्ट कंडीशंस वाला होगा उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो भी वेलोसिटी होगी उसकी कुछ ना कुछ, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी सपोज v1 है एंड x विद रिस्पेक्ट टू x कोई एंगल θ1 बना रहा है एंड ये जो है दूसरा वन व्हिच इज विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि ये अनदर वन जो है उसकी वेलोसिटी v2 है एंड वो एंगल बना रहा है θ2 एंड θ2 की वैल्यू गिवन डेटा में है कितना है 37 डिग्री। सो वी हैव टू ऑब्टेन दिस θ1। चलो सो इसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एज पर कंजर्वेशंस ऑफ द
momentum. What? As per conservation of momentum की बात करें, so as per the conservation of the momentum before and after की बात करनी है, ठीक है। m1 u1 बट वेक्टर u1 हमें कंसीडरेशंस करना है प्लस m2 वेक्टर u2 इज इक्वल टू बिफोर देन आफ्टर की बात क्या है v1 एज वेल एज v2, सो m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। चलो, सो नाउ इन दिस केस u2 की वैल्यू क्या है, रेस्ट कंडीशंस में 0 है, एज वेल एज m1 m2 तो सेम है, दैट मींस m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू f। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं m वेक्टर u1 प्लस 0 इज इक्वल टू m v1 प्लस m v2, ठीक है। तो यहाँ पे m कॉमन है एंड यहाँ पे, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजंस फ्रॉम द बोथ साइड m कैन बी कैंसल आउट, सो हमारा एक रिजल्ट आएगा, एक इक्वेशंस आएगा। सो वेक्टर u1 इज इक्वल टू वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2, ओके। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। चलो, सो नाउ as per the conservations of the energy, what? By conservation of energy 1 divided by 2 m u1 square, before the कोलिशंस की वैल्यू कितनी है, u1 है, प्लस 0 इज इक्वल टू आफ्टर the कोलिशंस v1 as well as the v2 है, so 1 divided by 2 m v1 square plus 1 divided by 2 m v2 square, okay। So 1 divided by 2 m, 1 divided by 2 m, 1 divided by 2 m can be cancelled out, so equation is what, u1 square is equal to v1 square plus v2 square। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। Now we have to do the multiplications, u1 multiplication of u1 हमें करना है, u1 dot u1, so u1 की वैल्यू we already have using the equation number 1, so vector v1 plus vector v2, another bracket vector v1 plus vector v2, only we have to put value of the v1 u1 दो बार हमें लिख देना है, ओके। चलो, now we have to open the bracket, so होगा क्या, v1 इसका मल्टीप्लिकेशन, देन आफ्टर v1 एंड इसका मल्टीप्लिकेशन, तो वो हम लिख देते हैं v1 डॉट v1 प्लस v1 डॉट v2 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2 into v2, so therefore v1 dot v1, therefore v1 square plus v1 dot v2 and v2 dot v1, that means 2v1 dot v2 plus this is v2 dot v2, that means v2 square, okay। So v1 square plus v2 square plus 2v1 v2, chalo, now v1 plus v2 square plus v2 square, using these equations what we can write, we can write u1 square and obviously over here u1 dot u1, so उसका भी क्या होता है u1 square, ठीक है। सो u1 square इज इक्वल टू, इसकी जगह पे भी हमारा क्या हो जाएगा अभी, u1 square प्लस 2v1 dot v2, so therefore u1 and u can be cancelled out, so 0 is equal to 2v1 dot v2, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, v1 dot v2 is equal to 0, so vector v1 and v2 is equal to 0, तो हम क्या बता सकते हैं कि ये v1 है, ये v2 है, इन दोनों का बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90, कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90, बोथ आर दी परपेंडिकुलर, दैट मींस ये v1 है, ये v2 है, तो उन दोनों का बीच का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90। इसमें से अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, थीटा तो ऑलरेडी गिवन है, थीटा 2 37 है, सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ दी थीटा 1, चलो, सो टोटल थीटा इज इक्वल टू 90, so therefore theta 1 plus theta 2 is equal to 90, so theta 1 is equal to 90 minus theta 2, so 90 degree minus theta 2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन डेटा में है 37, so therefore value of the theta 1 is equal to